This is GO-MMT Radio. GO-MMT Radio. Let's get go. Powered by Make My Trip, Go Ibibo and Redbus. It is a Friday right in the midst of festivities. From Ganesh Chaturthi to Raksha Bandhan to Navratri to Durga Ashtami to Dasera and many more in between. We now are entering the festivities of light, which is supposed to be the biggest of the year. And of course, the bigger one, or as the momentum increases, we will close the year with Christmas. We just love India for its diversity, don't we? And just like that, even in the world of entertainment, we've got such diverse content and stories to be told, because every culture that we are rich in our country has got something different to offer, from the food they have to the attire they wear to just small things that they do on a daily basis. The communities are large, not only in number but also large-hearted. And that is why the stories that come out, they thrill us all the way through. There's a lot happening today, a few releases, and of course some of them on OTT platforms. Why don't you stay tuned, because you're going to have a lovely ride when you find out that there are some very interesting things that you can binge watch over the weekend. As our work in the world of entertainment keeps on improving because of our exposure to the world, thanks to digital technology, thanks to the fact that our children, our students, and anybody who is interested in the world of entertainment, films and otherwise, are traveling the world to make more films and also learn about it. One such story yet again has come out, where he has gone on to win a Student's Oscar this year. It's pretty cool, right? This is Filmy Friday. I'm your host Annie, and you're listening to GO-MMT Radio. It's 19-year-old Rohingya refugee Khushi, who had been really striving hard for education despite the fact that she was a person who was completely moved away from what her roots or what her foundation was and thrown into another country because she, along with her family, had to save their lives. Now, when New Delhi filmmaker and former journalist Rishabh Raj Jain, who was studying in New York and for some reason went to Bangladesh and came across her, he was inspired by her story. और इसीलिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम है अ ड्रीम कॉल्ड खुशी. और इसी डॉक्यूमेंट्री ने अभी इसी हफ्ते में एक्चुअली स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड 2024 का अवार्ड जीता है इन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी. फिलहाल तो वो वैसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं और साथ साथ सोच रहे हैं कि इतनी अच्छी इंस्पिरेशन मिली है और मोटिवेशन मिली है, तो यही 35 मिनट डॉक्यूमेंट्री वो कंसिडर कर रहे हैं फाइनल अकेडमी अवार्ड्स में भी भेजने के लिए. That is so good. We are so proud of you, and we're always, I think, extremely happy about the fact that more and more of our work is getting recognized on international platforms. This is GO-MMT Radio. I'm your host, Annie. I'm going to return to talk about विकी विद्या का वो वाला वीडियो. भाई नाम ही ऐसा है कि पर फिल्म भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं कर गया. विकी विद्या का वो वाला वीडियो. हाय, नाम से ऐसा लग रहा है कि it should be a good comedy, or at least they're trying to come out with a name that is kind of, exciting enough. Rajkumar Rao, Tripti Dimri, the latest rom-com directed by Raj Shandelia. इसे mixed reviews मिला है, या मैं कहूँ कि while it has made a little more money than Jigra, वैसे Jigra also has been appreciated for the fact that फीमेल लीड प्रिजन ब्रेक अटेम्प्ट कर रही हैं. ऐसा कभी भी हमारे सिनेमा में या फॉर दैट मैटर हॉलीवुड में भी कम ही किया है. एंड सो दैट इज़ डेफिनेटली अ फर्स्ट, और बहुत अच्छे से हैंडल किया है पूरे फिल्म को. बट देन इन द एंड इट सीम्स इट वॉज नॉट कन्विंसिंग इनफ. वेल, दैट वॉज जिगरा. बट नाउ कमिंग बैक टू विकी विद्या का वो वाला वीडियो. अब इस फिल्म में चीप जोक्स भी हैं, सो मच सो कि राजकुमार राव के स्त्री से भी कुछ लाइनें यहाँ पर यूज़ की गई हैं जिस पर काफ़ी शोर मचाया गया था. और फिर राज शांडिल्य ने कहा कि नहीं, इनको हम निकाल कर एक अलग वर्जन रिलीज़ करेंगे 2-3 दिन में. आई मीन, दिस इज़ आफ्टर द फिल्म हैज़ रिलीज, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैपनिंग अराउंड द फिल्म ऑल्सो. तो आधे लोगों को तो पसंद आया, आधे लोगों को पसंद नहीं आया है. वॉट डज दैट मीन? वेल, इट इज़ अ लिटिल बैड फॉर नॉट राजकुमार राव, उनकी तो हिट फिल्में चली रही हैं, बट फॉर तृप्ति दिमरी, her last film Bad News also, except for the song Tauba Tauba that did so well, exceptionally well, the film did not necessarily again do that well. Box office में शायद flop का नाम या टाइटल इसे मिला ज़रूर है, although everybody was appreciated for their work.
We'll see where this goes, and I hope Tripti is able to give at least one really, really big hit because I think she has potential, don't you think? This is GO-MMT Radio. I'm your host Annie और आपको शायद पता ना हो या अब तक अगर पता चल गया हो तो आपने अलाइव ऐप डाउनलोड तो कर ही लिया होगा, राइट? इसी महीने 1 तारीख से एज अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर MMT आपके लिए 5,000 रुपए उस वॉलेट में डाल रहे हैं, पर उसे पाने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है, अलाइव ऐप डाउनलोड करना है. अलाइव इज ALYVE. ये एक हेल्थ ऐप है और इस 5,000 रुपए के साथ साथ आप डॉक्टर कंसल्टेशंस कर सकते हैं क्लिनिक में जाकर. उनकी लिस्ट इस ऐप पर आप पाएंगे. प्रिस्क्राइब डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं, बेसिक हेल्थ चेकअप्स भी कर सकते हैं, डेंटल एंड विजन केयर, फार्मेसी परचेसेस. अब ये 5,000 रुपए जो है वो MMT आपको दे रहा है इस वॉलेट में. सो इफ यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ योर हेल्थ, which is if you want to make sure that you are going to continue to stay healthy both mentally as well as physically, तो Alive Health ऐप को तो आपको अभी के अभी डाउनलोड करना है और अपने कोलीग्स, अपने दोस्तों को MMT में ज़रूर बताइएगा. गुड ट्रिपर्स, आई होप यू आर हैविंग फन, क्योंकि शो का नाम है फिल्मी फ्राइडे और अब मैं आपको बताने वाली हूँ फिल्में जो कि रिलीज हो रही हैं आज बोथ हॉलीवुड एज वेल एज बॉलीवुड. Social Spotlight on GO-MMT Radio. So what's happening on Make My Trip Insta handles? Well, there are quite a few. One is, of course, the parent channel, that is Make My Trip. Then there is Make My Trip UAE, Go-IBIBO, and Make My Trip Homestays. Let's start with the parent channel. Of course, there was this Dashera special, which still continues to be, by the way, where you could have got the best Durga Pujas and the best that you can find in food in Kolkata. Oh, those packages are just quite enormous and quite exciting. You must check it out. And then for foodie travelers, it's time to swipe through the world's tastiest hotspots. Oh my God, they've listed it all together and you can just pack and then leave to the places to try out different cuisines in different parts of the country. That's pretty nice, nah? And then going on to UAE, they have got some really beautiful plans listed out for the rest of the year, up until the year end, where the big holiday season in Europe and other places begin. You want to make the most of it and have some really cool offers? You've got to check out Make My Trip UAE. Moving on to Go-IBIBO. Oh, that is a really cool tie-up. And stars from Tamil Nadu and everywhere else in the south of India are actually talking about it on Go-IBIBO, and that is that there is a PVR and Go-IBIBO collaboration. Now in this collaboration there is a special something happening at PVR Cinema's official Inox Luxy Jazz. Well, this is basically to promote and push Rajnikant's latest movie, which has got some of the top names including Amitabh Bachchan. You want to try that out? Check out the Instagram pages of Go-IBIBO. And then moving on to Make My Trip Homestays. Well, there are some really beautiful places cut out for you where you can take your pets. Yeah, they're furry stays, there are beautiful stays, they are pet approved stays. You want to check out the offers that are available because Make My Trip really knows how to put all of this together because they know you, they love you, and they're putting the best offers down for you. Check out all the Insta pages. This is Social Spotlight on GO-MMT Radio. I'm your host Annie. The show is called Filmy Friday. The first film is an animation film, Wild Robot. आपने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन्स सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा. एनिमेशन सीरीज, इट वॉज अ सुपर डुपर हिट, सो मच सो कि इनकी सीरीज और अलग अलग वर्जन्स भी निकलने लगे जो कि हर कोई OTT प्लेटफॉर्म पर आप पा सकते हैं. इट बिकेम सच अ बिग हिट. तो डिज्नी लेकर आ रहे हैं एक और एनिमेशन फिल्म जिसका नाम है वाइल्ड रोबोट. एक शिप रैक होता है कहीं समंदर में, शिप का कुछ बचता नहीं है और वहाँ से एक इंटेलिजेंट रोबोट जिसका नाम है रोज, वो एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है जहाँ पर लोग हैं ही नहीं, बड़े सारे अजीब अजीब जानवर ज़रूर हैं, वहाँ पर पहुँच जाता है. और इस हार्श एनवायरनमेंट में रोज़ कैसे जी पाएगा, कैसे रह पाएगा. Rose bonds with the island's animals and cares for an orphaned baby goose. It is directed by Chris Sanders and also written by Chris himself. It stars Lupita Nyong'o, Pedro Pascal and Kitty Connor. Well, it is also said that Disney का आज तक का greatest animation movie है ये.
मुझे लगता है आपके पास फिर एक अच्छा मौका तो आ ही गया है to go watch this film in the theaters. Yes, this has to be seen on the big screen. Now, another film that is releasing, which has got an Indian origin actress who made it very big in Will Smith's Aladdin, Naomi Scott, वो आ रही हैं इस हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री में. स्माइल है मूवी का नाम. About to embark on a new world tour, global pop sensation Sky Riley, जो कि Naomi प्ले कर रही हैं इस कैरेक्टर को, she starts experiencing increasingly terrifying and inexplicable events. अभी बहुत ओवरवेलम हो जाती, बहुत डर जाती है इन एस्केलेटिंग हॉरर्स की वजह से, और प्रेशर तो है ही क्योंकि आप फेमस भी हो. नाउ शी इज फोर्स्ड टू फेस हर डार्क पास्ट टू रीगेन कंट्रोल ऑफ हर लाइफ बिफोर इट स्पाइरल्स आउट ऑफ कंट्रोल. Directed and written by Parker Finn, starring Naomi Scott, Kyle Gallner, and Drew Barrymore. Yet another film that is good enough reason for you to go watch these in the theaters. दोनों की ट्रेलर्स काफ़ी कड़क हैं. वैसे क्रिटिक्स तो बातें अच्छी अच्छी कर रही है आलिया भट्ट की जिगरा के बारे में, ऑल्दो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इतना दम नहीं है. अपेरेंटली क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, जो कि अंत में जो है, while the film has been shot very very well, it is by a very well experienced and very well known director वासन बाला. अंत में जो है कुछ खास कन्विंसिंग नहीं है कि प्रिजन में आप पहुंच जाते हो और किस तरह से आप अपने भाई को बचाकर लेकर आ जाते हो. इतना आसान भी नहीं होता है. बट what did stick and what people have really appreciated is that a female lead is taking over powerful acts like breaking prison. ये हमने कभी देखा नहीं है. हॉलीवुड में भी हार्डली हमने ऐसा कुछ देखा है. सो कीपिंग अप विद दिस ट्रेंड, एक तमिल फिल्म रिलीज हो रही है आज, which revolves around a female contract killer. कोटेशन गैंग पार्ट 1 है फिल्म का नाम. Sounds quite catchy, right? Now, here the lady takes on the crime syndicate and fights for power. It's directed by Vivek Kannan, starring Jackie Shroff, Akshaya, Sara Arjun. There's also Sunny Leone in a very kadak role in this film, by the way. अगर आपको मार धाड़ खून खराबा पसंद है, जहाँ पर वुमेन भी, लड़कियाँ भी इन्वॉल्व हैं, यू हैव टू हैव सम जिगरा फॉर दिस. ओह यस, एंड यू बेटर हैव, क्योंकि मुझे लगता है आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे. जैकी श्रॉफ को तो ट्रेलर में देखकर मैं तो बहुत खुश हुई. What has been depicted of him as a Don and the way he's portraying himself, and even Sunny Leone for that matter, and every other character is very, very well placed. यार ये तो देखना ही चाहिए. Of course it's dubbed in Hindi, so you can watch it in any language you love. It's dubbed in multiple languages. अब जो फिल्म मैं आपको बताऊंगी, जिसके बारे में मैं कह रही थी राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द शो, इज PC हैज़ इन्वेस्टेड इन दिस फॉर मेनी मेनी ईयर्स नाउ. दिस इज़ बीन इन द मेकिंग फॉर क्वाइट सम टाइम. इनफैक्ट ये जो ट्रू स्टोरी है वो बताई गई थी आमिर खान के शो सत्यमेव जयते पर. इट इज़ ट्रू. द नेम ऑफ द फिल्म इज़ पानी. Yeah, it is a Marathi film, social theme है, which is very beautifully tied into romance. ट्रेलर काफ़ी प्रॉमिसिंग है. स्टोरी है जहाँ एक लड़का अपने गांव को चेंज करने के लिए, यानी कि गांव में पानी लाने तक का चैलेंज ले लेता है when the girl says no to him in an arranged proposal. वो कहता है मैं आप ही से शादी करूँगा और आप पानी नहीं इसलिए नहीं आना चाहती ना, मैं पानी लाकर फिर आपके पास आऊँगा और फिर आप मेरे साथ ज़रूर आना. और वो कैसे अपने गांव में लड़की जो है वो बड़ी मतलब खुश होती है, एंड हाउ शी फाइट्स फॉर हिम फ्रॉम वेयर शी इज़ एंड हाउ शी सपोर्ट्स हिम ऑल द वे थ्रू. नाउ दिस film actually brings out the dangerous and pathetic state of some regions of our country, Marathwada, जहाँ पर based है ये film in Maharashtra, that has the debilitating reputation of water scarcity, which has resulted in suicides of thousands of farmers in so many decades now. Directed by Adinath Kothari, who's also the lead actor in the film, by the way, and written by Nitin Dixit. You must go watch this one. Again, in the theaters. Well, इसी के साथ शो खत्म होता है और मैं फिर आपसे मिलूंगी मंडे को बधाई हो लेकर, only on GO-MMT Radio. This is your host Annie. You have a super duper binge watching weekend. खूब मजे कीजिए, खुश रहिए और फेस्टिविटीज भी एंजॉय कीजिए. Bye bye. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going to a trance. You don't even have to do too much. You can tell me I'm with just a touch, maybe. Oh, since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can't see
Go Trippers! This is Ranveer Singh and you are listening to Go-MMT Radio. Head, set, go. To listen to your favorite Go-MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, LinkedIn and Instagram. Visit the Go-MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.